Hi friends, how are you? Morning, sir. Fine, sir. You tell, sir. मैंने एक ट्वीट डाला कि स्पेस 6 बजे करे क्या। तो एक एक भाई बोला कि आप हमेशा निफ्टी नीचे जाने का ही बात करते हो। तो स्पेस का क्या मतलब है? ये बात भी बराबर है। तो आज हम बोलते हैं निफ्टी ऊपर Hello. जाएगा। हेलो। हेलो। हाँ तेजस भाई। चल निकल। तो आज हम बोलते हैं निफ्टी नेक्स्ट ईयर में 17,900 हो जाएगा। निफ्टी ऊपर जाएगा। सब लोग खुश रहो। लेकिन एक बात आप लोग समझते नहीं हो कि निफ्टी एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है। उसके ऊपर जाना नीचे जाना आपका पोर्टफोलियो में उसका कोई असर नहीं होता है। शेयर बाजार है, सिर्फ यहाँ पे शेयर लेते हैं या बेचते हैं आप। ये निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस आर टूल्स ऑफ स्पेक्यूलेटिंग। नाउ if you are bullish on that speculative tools, God save you. Never ever be bullish or bearish on Nifty. It won't take you anywhere. It won't make you any money or wealth. So anybody who is talking nonsense about Nifty, मैं बोलता हूँ 12,000 होएगा होएगा। वो कल होएगा परसों होएगा नहीं मालूम, लेकिन 12,000 होएगा। ठीक है ना यार, ये व्यू है मेरा, उसमें आप लोग इतना उछल कूद क्यों करते हो? मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं 12,000 बोला तो 12,000 आए। मैं अगर 12,000 बोला हूँ तो 9,000 भी आ सकता है। ऐसा कुछ लिखा नहीं। और निफ्टी 25,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट माई व्यू इज दिस। Having said that, there are plenty of shares you can buy, you can sell. Concentrate on that. Why do you concentrate on a old man like me and बेवड़ा है, दारू पीता है, क्या फूकता है? And I challenge anybody to discuss with me about Nifty. Nifty has 50 stocks that almost everybody will know, but they wouldn't know which stocks are there. And if they know, they wouldn't know how much weightage each stock has. I have detailed knowledge about all that. Please don't abuse me. Actually, I don't mind if you abuse me also, because it's Twitter, faceless thing. ताकत है तो आओ सामने, आपका एड्रेस दो। भोपाल में हो, मेघालय में आऊंगा मैं, और इतना पावरफुल हूँ कि थप्पड़ मारूंगा आपको। लेकिन ये सब का कोई मतलब नहीं है। वी आर हियर टू डिस्कस आइडियाज। और अपने जो सोचते हैं कि मैं जो सोचता हूँ उससे आपका 2 पैसा बने या बचे, दैट इज माई ओनली थिंग। आई एम नॉट हियर टू propagate any agenda. I don't have an agenda. My agenda is very simple. Please, from each other's knowledge, let us make money, let us prosper. ये जो लड़के ने मेरे को लिखा था निफ्टी के बारे में, वो 24 साल का है। बोलता है तुम निफ्टी हमेशा नीचे जाने का बात करते हो। फिर मैं लिखा, फिर वो लिखा, मैं लिखा। अल्टीमेटली मुझको लगा कि वो लड़के में दम है। मैंने उसको फॉलो किया। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स में से भी पता चलता है कि आदमी में कितना दम है। वो बेवड़ा है, दारू पीता है, वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। एंड we are at really a juncture where the Nifty has stopped acting.
very, very low. Only if they go down, the volume is there. So nobody believes in this rally. And again, I'm talking of Nifty. Most of the stocks that are in FNO are tired. And I tweeted few days earlier that uh, uh, this phenomena is known as a tired bull liquidation. Bulls are tired. ए, कितना महीना हो गया कोई हिसाब नहीं है, 18 महीना 17 महीना. सो द बुल्स आर टायर्ड. अभी उनको भी लेने को घंटा लाता है. तो ऐसे बाजार में ये मार्केट कैसे बिहेव करता है मुझको आइडिया है. मैं बोलूंगा लोग फिर दोबारा गाली देंगे. लेकिन एक बात समझना, ये जितना भी बुल रन है ये भी आजकल बी ग्रुप में चला है. संभल के रहिएगा. वो सब ब्रेकआउट रॉकेट वो सब छोड़ो. मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, अच्छा शेयर लो. सुख पाओगे. निफ्टी 12,000 होएगा, 25,000 होएगा, 10,000 होएगा, कुछ भी होएगा निफ्टी. बट अच्छे स्टॉक ऊपर ही जाएंगे. यू विल मेक लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी. एंड प्लीज, आई एम रिपीटिंग बिकॉज अननेसेसरी क्यों बोलते हो मेरे को कि बेवड़ा है. तुम्हारे बोलने से मैं बेवड़ा नहीं हो जाऊंगा या क्या फूकता हूँ. अरे भाई, कभी ड्रग्स नहीं लिया लाइफ में. ऐसे ही आई एम हाई ऑन लाइफ. आई एम वेरी हैप्पी. आई हैव एवरीथिंग that one can aspire for. Now, another thing is, if you will see ROC, ROC, I don't know what you call it, a rate of change in stocks has fallen a lot. I don't know how to see it or gauge it, but I think there is a tool. It is very, very, very dicey. ROC. समझ तो वो क्या बोलते हैं उसको. सर नहीं समझा मैं सर. आरओसी. आरओसी मतलब जो एक वेलोसिटी होता है बढ़ने का. आरएसआई. अच्छा, ओके ओके. आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ. रिलेटिव स्ट्रेंथ. हाँ. तो आरएसआई अभी सब स्टॉक का मैं देखता हूँ. नहीं, मैं देखता नहीं हूँ, स्क्रीन पर से समझ में आता है कि थक गया है सब. सब थक गया है. ऐसे में ओके. और निफ्टी जो है वो कल HDFC 2500 हो जाता है, रिलायंस 2700 हो जाता है या 2800 हो जाता है, तो न्यू हाई हो जाएगा. बट आपका घर में क्या आएगा वो डिस्कशन में अच्छा है कि निफ्टी ऑल टाइम लो. बट अपने घर में क्या. और मैं चैलेंज मार के बोलता हूँ, चैलेंज, कोई भी निफ्टी खेल के पैसा बनावे ना, हमें कुछ भी हार जाए. It is totally a synthetic product and synthetic products are very expensive. So please resist from arguing unnecessary. आप बोलते हो निफ्टी बढ़ेगा, हाँ चलो मान लिया, चलो एंड ऑफ आर्ग्यूमेंट. अभी क्या आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, कौन सा स्टॉक लूं या कौन सा स्टॉक बेचूं. दैट शुड बी द डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट, ना कि तू बेवड़ा है. दैट शुड नॉट बी. और क्या है, ओके छोड़. मेरे हिसाब से मैं एफएनओ में ही खेलता हूँ. एफएनओ में बहुत सारा स्टॉक इतना वीक है कि कोई
मेरे को लगता है कि दे विल रिएक्ट वेरी बैडली. ओके समझ बोलो. गुड इवनिंग सर. सर एक तो हम कभी निफ्टी को कभी बोला नहीं है कि निफ्टी आप बेचो या लो. हमने ये बोला है या आपने ये बोला है या मैंने ये बोला है कि निफ्टी का जो कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट्स जो है वो ओवर प्राइस्ड है, मींस कि उनका पी ज्यादा है. तो वो कम होगा, उसकी वजह से आपका जो शेयर प्राइस है वो कम होगा और इनहेरेंटली निफ्टी विल कम इवेंचुअली बिलो 15,000, 14,000, 12,000 जो भी लेवल है वो आएगा. बट हमने किसी को ये नहीं बोला है कि आप निफ्टी के पुट लो, कॉल बेचो, कॉल लो या कॉल बेचो. अभी इनको कोई भी अभी यानी जो लिसनर है उसको ये नहीं होना चाहिए कि कल के दिन में ही ये होने वाला है जो शरद सर ने बोला. वो ये होगा, कब होगा वो तो उनको नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम, मार्केट को भी नहीं मालूम होगा कब होगा. वो तो जब आएगा तब आएगा. बट जो चीज है वो वी हैव टू रिमेन कॉशियस, ओवर ट्रेड नहीं करना है और निफ्टी के पुट लेना है, बट इतने नहीं लेना है कि वो जीरो हो जाए. फिर बाद में आप हमको या सर को या किसी और स्पीकर जो आए हैं यहाँ पर जो बेरिश व्यू रखते होंगे या रखते हैं उनको आप उनकी ट्विटर लाइन पे जाके गाली गलौज करो. तो ऐसा नहीं करना है सर. आई हैव सीन 2 or 3 मैसेजेस वेरिन उन्होंने निफ्टी का पुट लिया है दिसंबर का, अक्टूबर का, नाम नहीं लूंगा मैं, बट अभी उसका प्राइस डिवाइड बाय 2 हुआ है. और यहाँ पर वाइस ट्रेडर के क्या आए थे सर एक महीने पहले, वाइस ट्रेडर करके एक आदमी बोलने आया था. उनका एक एक्सपीरियंस, जो सब्सक्राइबर है उसने मेरे को एक्सपीरियंस बोला. वो 15,200 से इंडेक्स में शॉर्ट है. वो अभी 15,200 से शॉर्ट है दैट पर्सन. तो उसने अराउंड जो कमाया था ये बेरिश मार्केट में, उससे ज्यादा तो उसको लॉस हो गया है अभी. नहीं नहीं वो सब जाने दो समझ भाई. हाँ सर. अकॉर्डिंग टू मी जो भी ऑप्शन खेलता है ना अपना फैमिली का वेल्थ बर्बाद करता है. और जो ऑप्शन बेचता है वो फैमिली का घर बेच देगा अल्टीमेटली. सो आई एम टोटली अगेंस्ट ऑप्शंस and totally against playing Nifty. As you would have seen, Samar, I don't यस सर. play Nifty or Bank Nifty at all. कुछ भी नेवर हो सर, जाए. नेवर सर. हाँ एक बात है कि 14,000 होएगा निफ्टी तभी मैं 5 लाख मार दूंगा उसको. लेकिन अभी नहीं मारूंगा. ये श्योर है मेरा दिमाग में है. जिस दिन 14,000 टूटेगा मैं 5 लाख बेच दूंगा. और बहुत सारा शेयर है मेरे दिमाग में. वो मैं बड़ा बड़ा क्वांटिटी में लूंगा. ह्यूज क्वांटिटीज. बिकॉज आई नो निफ्टी इज अ सिंथेटिक प्रोडक्ट. Stocks are not. Only request to people again and again and again and again. Please don't play options. Please don't play Nifty or Bank Nifty. Play stocks. And because you are not, see, I would call myself a professional shorter. I short every now and then. But you should not indulge in it. Shorting is a very professional business where things where things are or all the odds are against you. You are fighting 97% of people. So shorting is a very, very fine art. You cannot short ICICI Bank or this or that. Temporary ticket. There are only certain stocks where you can short whole hog and get out. Now I was सर आवाज very ब्रेक हो रही है सर. सर आवाज ब्रेक हो रही है सर. आगे
नहीं थोड़ा हेलो हेलो, अभी आ रही है? नीलेश भाई, आपको सुनाई दे रहा है सर? नहीं, वॉइस ब्रेक है सर। हाँ, तो तब तक आप ऋषि भाई को लो। गुड इवनिंग सर ऋषि जी। गुड इवनिंग शरद जी, गुड इवनिंग एवरीवन आउट हियर। शरद जी की बात सुनने आया था। शरद जी ऑलवेज कम विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन द मार्केट, और मैं हर समय उनसे थोड़ा डायमेट्रिकली अलग रहता हूँ। सो अगेन वी रेस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन बट डिफर ऑन द ओपिनियंस आल्सो। बट शरद भाई का खुद का एक्सपीरियंस है, ही डू हिज वर्क एंड अगेन ही इज गिविंग लॉट ऑफ डिस्क्लेमर्स कि अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो ही इज अ प्रोफेशनल शॉर्टर। वो अपना शॉर्ट करते हैं तो अपना सोच समझ के करते हैं, और अगर वो रॉन्ग भी होते हैं तो बहुत जल्दी सौदा काट लेते हैं, या जो भी उनको करना, ही नो हाउ टू कंट्रोल द डैमेज। सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज वो चीज़ है। मैं मेनली मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ही बात करूंगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मुझे लग रहा है कि वी आर बुल रन। मुझे लगता है हम लोग एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में, हम लोग इंडिया इज इन अंडर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, जो 15-20 साल पहले चाइना एक डीकपल्ड हुआ था वर्ल्ड ग्रोथ से, और वो एक अलग ट्रजेक्टरी पकड़ लिया था। इंडिया इज इन दैट ट्रजेक्टरी। इंडिया एक डीकपल हो रही है। जैसे आपने देखा होगा, डाउ जोन्स नीचे जा रहा है, वर्ल्ड के मार्केट नीचे जा रहे हैं, वर्ल्ड की ग्रोथ नीचे जा रही है, इंडिया की ग्रोथ ऊपर आ रही है, इंडिया का टैक्स रेवेन्यू बेटर हो रहा है, इंडिया का इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है, जबकि वर्ल्ड का इन्फ्लेशन इज स्टिल ऑन अ हायर साइड। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। एंड जो गैप था यूएस मॉर्गेज रेट में और इंडियन मॉर्गेज रेट में, आज इंडिया में अगर होम बिल्डर्स अगर होम लोन लेने जाते हैं तो 7.5 से 8% में मिल जाता है। यूएस में वो 6.5% हो गया। सो द गैप जो बीच में 4% का गैप चलता था, वो गैप काफी कम हो गया। सो अगेन वी हैव फिल्ड अप दैट गैप, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, मुझे लगता है कि देखिए, स्टॉक सिलेक्शन तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक बैलेंस शीट नहीं पढ़ो, जब तक वो मार्केट लीडर्स को आप चूज नहीं करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। या सेकंड लीडर को लेते हैं, सेकंड रन को लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के अलावा मुझे नहीं लगता है कि और भी किसी कहीं जाना चाहिए। वेदर आप कोई भी सेक्टर हो, यू ऑलवेज चूज द लीडर, और वो लीडर विल गिव यू द बेस्ट ऑफ द रिटर्न्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर। सो वेदर इज टूरिज्म है, वेदर इज एयरलाइंस है, वेदर इज सीमेंट है, वेदर ये सारी चीजें। आप सीमेंट में, आप सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सीमेंट जो लास्ट क्वार्टर बहुत खराब लग रहा था बिकॉज ऑफ द एनर्जी प्राइसेस गोइंग अप, मुझे अब वो एनर्जी प्राइसेस जो हेडविंड्स थी, आज वो टेलविंड्स बन गई है। जो एनर्जी प्राइसेस $600 तक पेटको आपके कोक ये सब कोक और कोयले के दाम ऑलमोस्ट $600 तक चले गए थे, आज वो नीचे आ गए। पेटकोक आज $170 है। तो अगेन दैट हैज एक्चुअली हेल्पिंग द सीमेंट इंडस्ट्री, और उन्होंने अब प्राइस राइज करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज जो कॉस्ट पुल हुआ था, कॉस्ट उनके हाइक हो गए थे, तो उन्होंने एक रकम से धीरे धीरे करके ₹5 ₹10 करके दे हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग द प्राइस। 22 तारीख को भी ₹10-12 बढ़ा रहे हैं, तो दे आर डूइंग दैट। तो सीमेंट कंपनीज लुक्स वेरी गुड। एंड सेकेंडली, मुझे लगता है कि स्टील हुआ, सीमेंट हुआ, ये ऐसी कंपनीज है जिनको सेटअप करना इज नॉट इजी। आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लगता है, आपको माइनिंग का क्लियरेंस लगता है, माइनिंग लगती है, फिर लॉजिस्टिक सेटअप करना पड़ता है। तो एक, अगर आप थ्योरेटिकली अपने को लगता है कि एक सीमेंट की कंपनी अपने हजार करोड़ रुपया पॉकेट में हो, तो आप कल जाके सेटअप कर सकते हो। आपके पास अगर 1,000 करोड़ रुपया भी हो, तो भी आप 1 मिलियन टन का आप सेटअप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी, वेरी डिफिकल्ट। आपको लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस लेना पड़ेगा। तो एक बनी बनाई फैक्ट्री अगर आपको 500, 600, 400 मतलब करोड़ के नीचे भी मिलती है, तो मुझे लगता है कि वो एक स्टील है, वो एक बाई है, बिकॉज बेसिकली आप उससे सस्ते में तो आप सेटअप भी नहीं कर पाओगे। तो ये जो एक है ना, स्टील हुआ, सीमेंट हुआ, जो हेवी इंडस्ट्रीज है, या जो माइनिंग मेटल्स इंडस्ट्री है, मुझे लगता है कि ये एक इंडस्ट्री है जहां पर बहुत अच्छा रहेगा, और उनका एक डिविडेंड यील्ड भी अच्छा आ रहा है। जैसे कोल इंडिया ले लीजिए, एनएमडीसी ले लीजिए, आप स्टील सेल ले लीजिए, आप सीमेंट की सारी कंपनीज ले लीजिए, दे लुक्स एक्सीलेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरा एक वो है, एक मैं डेफिनेटली एयरलाइंस मेरा अभी फेवरेट है। मुझे लगता है कि एक एयरलाइंस जो हमें लगता था कि अगेन हेडविंड्स है, हाई क्रूड ऑयल्स है, अब जैसे जैसे क्रूड नीचे जा रहा है, और
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एवरी $10 क्रूड जब नीचे जाता है तो वी एड अप 0.5% ऑफ ग्रोथ। पहले वो उल्टा होता था, अब वो ऐड कर रहा है, पहले वो माइनस कर रहा था। इन्फ्लेशन को 0.7%, एवरी $10 इंक्रीज इन्फ्लेशन 0.7%। अब जब क्रूड नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग को वो इन्फ्लेशन भी नीचे आएगा। तो वी हैव पीक्ड आउट, इन्फ्लेशन हमारा पीक्ड आउट हो चुका है। इन्फ्लेशन रेट्स सॉरी इंटरेस्ट रेट्स हमारी पीक्ड आउट हो चुकी है। हमारी जो डिफ्लेटर्स है सारे वो पीक्ड आउट हो चुके हैं। तो अब गोइंग फॉरवर्ड जो जो हमारे हेडविंड्स थे वही हमारे टेलविंड्स बन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो सारा फायदा होगा वो अब गोइंग कमिंग क्वार्टर्स में काफी होगा। एंड सेकेंडली हमें लग रहा था कि हमारे यहाँ मानसून की कुछ प्रॉब्लम हो गई है, फूड ग्रेन्स की कमी रहेगी, बट वो भी लेट मानसून सर्ज ने वो फूड ग्रेन्स की भी कमी काफी कम कर दी। आई थिंक लास्ट ईयर से 3 या 4 मिलियन टन की कमी रहेगी, विच इज नॉमिनल, वेरी नेग्लिजिबल टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो फूड ग्रेन की भी इशू नहीं रहेगी, इन्फ्लेशन का भी इशू ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है रहेगा। सो गोइंग फॉरवर्ड आई फील कि मार्केट लुक्स वेरी गुड। सो अगर शरद जी, अगर उनका अगर माइक ठीक हो गया तो ही कैन टेक ओवर। मैंने अपने व्यूज रख दिए। Now you can hear. यस सर। Now you can यस you सर। can hear me. हाँ जी सर। हाँ, ऋषि भाई, हाँ सर, गुड इवनिंग सर। मेरे को आपने गुड इवनिंग। पर्सनली नो इश्यूज, आपको मेरे साथ में इश्यूज है, लेकिन मैं भी मानता हूं इंडिया इज अ स्टोरी, ओके, बट नथिंग विल, नॉट एवरीथिंग विल रन, नो, देयर आर ओनली सिलेक्ट पॉकेट्स विच विल डू वेरी वेल। आप सीमेंट स्टील का जो बात करते हो वो टेक्निकली बराबर है, बट इट विल नॉट क्रिएट एनी वेल्थ इन योर पोर्टफोलियो। यू टेक इट डाउन इन राइटिंग फ्रॉम मी, सीमेंट स्टील और जो भी एनएमडीसी बोलते हो, they are not wealth creators. What, at your age, how old are you, Rishi bhai? सर आई एम राइट नाउ 43, और आप यू विल बी सरप्राइज टू नो एक मिनट, एक मिनट, शरद भाई। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। If you are 43, you should be in high growth stocks, high growth stocks, and not in defenses. That's my argument. And I never said India is a third class country or a, a country is what it is. Stock market is not the reflection on the country. Stock market is reflection on the liquidity. Now, a share in Hong Kong went up so much. So what was it? Liquidity rush. Same way, after Hong Kong is at 19,000 or whatever. Why? Nobody likes. There is no liquidity and the future is bleak. Similarly, in India, I bet with you, there are, means whatever I know of, there are companies will become 5 times in 10 years. Believe me, 5 times. But those sectors are different. What you are looking is just like a very easy picks. If you go into industrials, you see the growth over there. Everybody has orders, they can't execute. उधर जाओ, सीमेंट से 1,04,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लिख के देता हूँ, अगले 10 साल में 5 लाख हो जाएगा।
So I'm biased towards good shares. I'm totally against shares which give you dividend yield and all that. That's not my cup of tea. मैं share लेता हूँ because it is a risk capital. I am putting money in shares not to earn interest. I am putting in money in shares because I see lot of upside. Not that I want to earn 10% dividend. And I agree with you on one item. Coal India, वो 400 होएगा लगता है. नहीं Because शरद भाई, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखो तो जो सबसे बोरिंग स्टॉक था एनटीपीसी, दैट हैज अरे गिवन द वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स. नहीं नहीं एनटीपीसी, कोल नहीं इंडिया, नहीं ये ऋषि भाई, एकदम बोरिंग बोरिंग शेयर था जो आप बोल रहे हो ना, ऋषि भाई, अनअट्रैक्टिव. हाँ. नहीं नहीं, I fully agree with you, but you are talking of 1 year and 2 year. I am talking of 10 years. If you go to see cement shares, where have they performed in 3 years? High to low, yes, but high नहीं हुआ है. So actually, we are discussing what stocks to buy. I am saying buy growth stocks. You are into commodities, and that's perfectly all right. And remember about Infosys, I said short. It's not going to go up. वो 50-100 रुपया बढ़ेगा क्योंकि वो इंडस्ट्री खत्म है. आप बोलोगे सीमेंट्स, मैं कपड़ा फाड़ के ले लूंगा. आप बोलोगे वेस्ट लाइफ, सब बेच के ले लूंगा. सर मैं So, आपको बोलता हूँ वेदांता ले लीजिए. अरे यार, आपको मैं आप एक तरफ सीमेंट्स रख दीजिए, आप सीमेंट्स, और एक तरफ वेदांता रख दीजिए. अपने एक टाइम पीरियड तय कर लेते हैं, आपका फेवरेट कोई भी टाइम पीरियड है, 1 साल 2 साल 3 साल. अपने 3 साल के बाद वापस ये जो भी टाइम फ्रेम आप कर लीजिए, आप एक टाइम फ्रेम पे चलिए और मैं आपको बताऊंगा, आपको डिविडेंड भी मिलेगा, आपको ग्रोथ भी मिलेगा और काफी इसमें मसाला भी मिलेगा, बिकॉज इट इज इनटू लॉट ऑफ थिंग्स. सेमीकंडक्टर में जा रहा है, उसके पास पेट्रोल है, सॉरी उसके पास क्रूड है, उसके पास जिंक है, उसके पास एल्युमिनियम है, उसके पास स्टील है, उसके पास सब कुछ है, पूरा एरे है, पूरा रेनबो है. तो व्हाट आई एम सेइंग, यू नीड टू आल्सो सी होलिस्टिकली. जस्ट बिकॉज इट्स अ बोरिंग शेयर या सेल है, या आपको वो वेदांता है, या आपका वो है, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आई अग्री, बट दैट डजंट मीन कि वो आपको रिटर्न नहीं देगा. नहीं ऋषि भाई, रिटर्न तो देगा, पक्का देगा. But I have my own philosophy. I cannot divert from it. Howsoever wrong I may be, but I will not divert. I won't go into commodities. You will be surprised. I have not bought a cement share or steel share in last 2 years. No, nahi. And anyway, it's a personal choice, ऋषि भाई. क्या फर्क पड़ता है. बट आपका जो आपने बताया वेदांता के बारे में, I'll definitely have a look, unbiased view. और होगा तो 50-100 लॉट ले लेंगे. चलिए ऋषि भाई. नहीं नहीं सर, एकदम ठीक है. इनफैक्ट मैं आप अगर मैं ट्विटर टाइमलाइन में जाओगे, मैं वेदांता को 90 रुपया से रिकमेंड कर रहा हूँ. वो 90 रुपया का शेयर था. मेरा ये लॉजिक था कि 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 30,000 करोड़ रुपया वो एक्सचेकर को देता है, बाय द वे ऑफ डिविडेंड, बाय द वे ऑफ, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक, मतलब आप रॉयल्टी ले लो, आप टैक्सेस ले लो, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस सब मिलाकर जो जो कंट्रीब्यूशन टू द एक्सचेकर है, वो कंपनी 30,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को देती है. तो जो कंपनी 30,000 करोड़ गवर्नमेंट को देती है, वो 30,000 करोड़ का मार्केट कैप कैसे हो सकता है? तो दैट वाज द माय पॉइंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. 1-1.5 साल पहले की बात है, और 90 में मैंने सबको बोला था, भैया आंख मूंद करके ले ले, तेरा डिविडेंड यील्ड है तो तुम्हारे एक डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है. एफडी हो गया एक रकम से, एफडी कम इक्विटी टाइप का चीज हो गया कि आपका डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, आपका एसेट बेस है, लिक्विडेट भी करोगे तो आपका 90 से ज्यादा ही पैसा मिलेगा. एंड सेकेंडली आपको इंटरेस्ट है. आज मुझे घर में मेरा 70-80 रुपया तो इंटरेस्ट है, वो आपके डिविडेंड ही आ गया है, और जो ग्रोथ हुई है वो अलग हुई है. तो मुझे लगता है अभी भी ये एक 4 फिगर जो होता है ना,
1000 रुपए के ऊपर आराम से जा सकता है नेक्स्ट 2-3 साल में. तो दिस इज व्हाट माय थिंक इज. आप बताया ना 40-50 प्लॉट ले लेते यार, काय को नाराज होता है. सुनो एक बात ऋषि भाई, ये शेयर बाजार है, 4-5 हजार कंपनी लिस्टेड है. जब मैं बोलता हूँ निफ्टी 12,000 होएगा, इसका मतलब ये नहीं कि सब डूब जाएगा. देयर विल बी लॉट ऑफ विनर्स, सो यू शुड हैव एन आई फॉर द विनर्स. और मैं वापस बोलता हूँ, प्लीज शॉर्टिंग से दूर रहिए, ये आपका काम नहीं है. शॉर्ट करने में पटलून गीली हो जाती है, 10 रुपया बढ़ता है तो आप झेल नहीं पाओगे, बिकॉज ह्यूमन बाय नेचर इज बुलिश. सर अभी भी आप 12,000 निफ्टी बोल रहे हो. हाँ तो क्या हो गया ऋषि भाई, उतना नहीं तो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ हैव यू चेंज, बिकॉज आपने जब नो. बोला था उस समय घोर मंदी था, मतलब वी वर टचिंग दोज 3 मंथ्स लो. नहीं दो नहीं नहीं आपने 2-3 महीना पहले बोला था, तो मुझे लगा अभी थोड़ा व्यू चेंज हो गया होगा आपका, नहीं नहीं क्योंकि उसके नहीं काफी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी चेंज हो गए ना. नहीं नहीं नो ऋषि भाई, आई एम मेंटेनिंग 12,000 बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस. Macro reason, macro are improving, no two doubts about it. They are improving. All the numbers that are flashed on TV, you see a perceptible growth, no two doubts about it. My view is based on valuations. Now, take for example, you are saying Vedanta will be anything, like say 500 रुपया, 1000 रुपया, जो भी होगा. I agree with you. But at the same time, there will be certain stocks which will go down. And to tell you, Vedanta is not in Nifty. So there are many, many stocks which have the potential to grow 2 times, 5 times, 10 times in 10 years time. You should be looking for it. You should not be looking to short. And I just said before you arrived, कि 14,000 निफ्टी होगा ना, तभी मैं बेचूंगा 5 लाख. उसके पहले शॉर्ट नहीं मारूंगा मैं. बट सो शरद भाई, आप 12,000 निफ्टी क्यों बोल रहे हो? 12,000 निफ्टी मतलब कोई बड़ा ग्लोबल इवेंट होगा नहीं नहीं तभी नहीं नहीं 12,000 नहीं निफ्टी नहीं आना चाहिए. नहीं नहीं इंडिया नहीं स्पेसिफिक इवेंट पे तो ये इतना बड़ा मार्केट नहीं टूट सकता है. सो व्हाई एग्जैक्टली यू थिंक, व्हाट एग्जैक्टली, मैं इसलिए नहीं समझना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में 12,000 का फिगर क्यों आ रहा है बार बार, और व्हाई इट इज कमिंग, बिकॉज इट हैड टू बी अ ग्लोबल इवेंट, राइट? नो नो. India on its own is a growth story. Growth has some value. Growth has some price. Now, talking about Nifty 50, two components, if they decompose or they don't perform, Nifty is gone. Please. So my whole take is on what was there 18 months ago. 18 months ago, it was 12,000. Okay. Rishi bhai. नहीं, Rishi एग्री. bhai. हाँ हाँ, मैं नहीं सुन रहा नहीं. हूँ सर. So I strongly believe, और मुझे तो 44 साल हो गया, कि mean reversion is a fact of life. It will happen, 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 irrespective of the fundas. GST कलेक्शन 2 लाख आ गया, इनकम टैक्स ये हो गया, वो हो गया, फिर भी अपना निफ्टी उधर आएगा, बिकॉज मीन रिवर्जन इज देयर. इट्स रूल ऑफ लाइफ. इट्स द वे द मार्केट्स फंक्शन. डोंट एवर फॉरगेट दैट. इफ यू अग्री विथ मी, आप you you will be safer, that you will not take additional risk. I am not asking you to short the Nifty, please. I'm just expressing my view. It is 12,000. Having said that, now also I am long 4 stocks in a very, very, very big way. So, where is my view and where is my transaction? So, there's a disconnect. That's a view, and what I am doing now is the present. I am concerned with making money.
आई एम नॉट हियर टू से कि देखो मैं 12,000 बोला था, 12 नहीं, नो वे। आप मेरा एक भी ट्वीट दिखाओ कि जो मैं बोला था। आई नेवर एवर डू दैट, एंड आई एम ओनली एक्सप्रेसिंग माई ओपिनियन विच आई थिंक विल बी 70 or 60% there. If not, I'll move with you. And I am moving with you. Rather, I am moving very faster than you on the upside. So, ऋषि भाई, ये जो ट्विटर स्पेस है, वो अगर आप समझो बराबर मैं क्या बोलता हूँ, तो कुछ है, वरना ये पागल आदमी है 12,000 बोलता है उसको हटाओ। नहीं, ये सब ऐसा है ऋषि भाई। अभी ये देखो, मैं एक नया निकाला टाटा कंज्यूमर, 816 का भाव है। ये 416 नहीं हो जाए ना तो मेरा नाम शरद नहीं। बट आप ठोकेंगे तो आपका पेंड बच जाएगा। ठोकना मत, खाली सुनना। और ऋषि भाई कुछ बोलने का है? नहीं सर, एक्चुअली टाटा कंज्यूमर में काफ़ी सालों से ट्रैक कर रहा हूँ, एंड इसमें एक स्टारबक्स की स्टोरी है, और स्टारबक्स जिस स्पीड से वो खोल रहा है, एंड बेसिकली मैंने देखा है स्टारबक्स भी मैं जाता हूँ, एंड द काइंड ऑफ पीपल कम, मतलब काफ़ी, मतलब ऐसा लगता है कि जगह नहीं रहती है बैठने की, एंड दे काफ़ी एक्सपेंसिव कॉफ़ीज होती है, 300, 400, 500, एंड लोग आराम से, स्पेंडिंग पावर लोगों का बड़ा है, और लोग लेते भी है कंफर्टेबली, लेकर आराम से एंजॉय भी करते हैं, तो शायद हम वो स्पेंडिंग पावर जो है ना, नहीं उसको नहीं शायद हम लोग नहीं अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं सर। नहीं नहीं नहीं, ऋषि भाई, ये अच्छा हुआ आपने ये पॉइंट निकाला। मेरे पास में टाटा कॉफी के 15% से बहुत ही ज्यादा शेयर था, क्योंकि 15% वॉज द थ्रेश होल्ड ओपन ऑफर के लिए। बट बहुत ही ज्यादा था, तो ये कंपनी के बारे में मुझको नॉलेज है। ये अभी आप स्टारबक्स बोलते हो, मैं भी मानता हूँ बहुत खुलेगा। बट हाउ मच डू यू वैल्यू स्टारबक्स एट? इफ यू आर वैल्यूइंग मैकडोनल्ड्स एट 10,000, Jubilant Food at 40,000. How much do you value Starbucks at 20,000? If you are very bullish, if you say 20,000, then the market of Tata uh, uh, consumer is 80,000 crores. So that 60,000 crores is for tea business, coffee business, and spice business, which I think is very, 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 very high. And all my life, if you will ask all my friends, I have been playing in Tata Global, Tata Coffee, and whatnot. So I know this company, I know all the directors, I know everything. सो आई एम जस्ट सेइंग कि ये जो 1.5 साल में बढ़ा है ना, द प्राइस डजंट गिव यू वैल्यू। इट विल बी, suppose if it doesn't go down, it will be here for next 10 years. That's what I'm saying. Yeah, Abhishek, you wanted to say something? हाँ सर, समथिंग आई जस्ट वांटेड टू ऐड अबाउट स्टारबक्स। तो अभी जो अपना स्टारबक्स यूएस वाला है, तो यूएस वाले का मार्केट कैप मैं जस्ट चेक कर रहा था। बट हाँ, द पॉइंट आई वांटेड टू मेक इज कि जो यूएस वाला स्टारबक्स है, द मेन एसेट दैट दे हैव इज दे वर्क लाइक क्रेडिट कार्ड। तो उनके पास जो अपना, जब अपन जाके अब स्टारबक्स में जाएंगे तो दे हैव दिस लॉयल्टी पॉइंट सिस्टम। तो उसमें क्या होता है कि अपन मान लो कि 1,000 रुपये का कुछ खरीदा, तो फिर उसमें से तुम्हारा 100 रुपये ऐसे कुछ लॉयल्टी पॉइंट में चले जाएंगे, एंड देन यू हैव टू प्रीलोड योर कार्ड स्टारबक्स में। तो वहाँ No, तो no, उनको, no, 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 no. That thing is available here also. हाँ यस सर सर, वो तो है सर। बट देन वो जो है ना कि सर स्टारबक्स का जो वैल्यूएशन है, बिकॉज इट्स वर्किंग लाइक अ बैंक लिटरली, कि दे आर गेटिंग इंटरेस्ट फ्री मनी फ्रॉम द कस्टमर्स No, no, एंड no, मोस्ट ऑफ इट गोस अनयूज्ड। no, no. That you are talking of US. हाँ सर। We are talking about India. Rishibai just said ke, based on this. So I just told him ke, how much of value you will assign. 20,000 crores, 30,000 crores. So suppose if you assign 30,000 crores,
then also 50,000 is too much for the other businesses. That's the limited शरद point. भाई, यूएस में इसका जो मार्केट कैप है $100 बिलियन का है। Hmm. हम लोग यहाँ पर $3 बिलियन के में मार्केट अज्यूमिंग मार्केट कैप में हम लोग को लग रहा है कि बहुत एक्सपेंसिव है। प्लस इसमें जो जो कार्ड वाली जो बात है कि लोग उसमें कार्ड में पैसा डालते हैं, तो ऑब्वियसली उनको इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है। इंटरेस्ट किसको मिलता है? इंटरेस्ट गोज टू टाटा, ऑब्वियसली द कंपनी, स्टारबक्स को जाता है। तो उनको एक रकम से नेगेटिव कैपिटल मिल रहा है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मिल रहा है। अगेन द नेगेटिव वर्किंग कैपिटल इज अ वेरी बिग थिंग। जैसे जब एनबीसीसी ₹100 चलता था, वो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पे वो ऑलमोस्ट इट वेंट टू ₹2000, स्प्लिट प्लेट होके बोनस एडजस्टेड होके, एंड उसके बाद वो कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पाया तो इट केम बैक डाउन। Lakshmi Machinery work. There are many companies which actually follow the negative capital. मतलब एडवांस कर लो, डेट लेने का जरूरत ही नहीं है, आप एडवांस लो क्योंकि आपका माल एकदम तेल लगा के बिकता है, यू आर द मोनोपोली आइटम, तो आप एकदम एडवांस लेकर आप फिर माल देते हो, और वो एडवांस एक्ट्स एज अ मनी चर्नर फॉर यू। सो बेसिकली द नेगेटिव कैप जो वर्किंग कैपिटल है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नहीं, बट हाँ बोलिए, सॉरी। नहीं, पर मैं ये बोल रहा था, फिर क्या है, टाटा का सबसे बड़ा बात ये है, अभी वो एयरलाइन भी आ गया। अब वो टाटा जो स्टारबक्स का जो मेन्यू है अब आता है आपका विस्तारा में, अपने विस्तारा अगर फ्लाइट करते हैं तो स्टारबक्स का मेन्यू आता है, तो उसको एक रकम से इन हाउस काफी बड़ा एक कस्टमर बेस मिल गया एयर इंडिया में, विस्तारा में, ऑल दिस थिंग्स। सो वो अगर 2020 आई एज्यूम तीनों एयरलाइंस को मिला लीजिए, एयर इंडिया या आप एयर इंडिया ले लो, विस्तारा ले लो, आप एयर एशिया ले लो, तीनों का अगर आप मिला लो तो आई थिंक 24 से 25% का मतलब एयर का मतलब एयर व्हाट यू कॉल आपके एविएशन का मार्केट मतलब शेयर है, मार्केट शेयर है। सो 25% आपका आपको कंज्यूमर बेस फ्री में मिला हुआ है, तो वो भी एक इम्पैक्ट करता है कि ताज का ऋषि कैटरिंग हो रहा है और भाई, ऋषि भाई, आपका स्टारबक्स का हो रहा है। ऋषि भाई, स्टारबक यूएसए consists of the whole world including India, okay? और उसका 100 बिलियन आप बोलते हो, तो ये बहुत ज्यादा है सर। ये समझो 30,000 करोड़ में पकड़ता हूं तो बहुत ज्यादा है वो, फिर भी मान लिया तो 50,000। सी द पॉइंट इज नॉट अबाउट स्टारबक्स, द पॉइंट इज अबाउट टाटा कंज्यूमर। वो 50,000 इज वेरी एक्सपेंसिव, दैट्स माई पॉइंट। स्टारबक्स आप 20,000 पकड़ो, 30,000 पकड़ो, आई डोंट माइंड, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ QSR, ओके? चलिए अभी और किसी को लेते हैं। अमित भाई बोलिए, क्या बोलना है आपको? हेलो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था ऋषि भाई से, एज ही इज टॉकिंग अबाउट द वेदांता। मैं भी इसको काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, एंड जब सीसा गोवा वाज द यूनिट तब से मैं इसको ट्रैक पे हूँ, तो मेरे पास भी इन्वेस्टमेंट में कुछ थोड़ा सा क्वांटिटी है। बट मेरा एक सबसे बड़ा जो कंसर्न है इस कंपनी के साथ, इस 100% शेयर प्लेज, और ये एक ऐसी पहली कंपनी मैं जानता हूँ इसका लाख करोड़ का मार्केट कैप है और इसके 100% शेयर प्लेज हैं। सो कुड यू प्लीज कुछ मतलब आप बता सकते हैं क्या रीजन हो सकता है कि कंपनी इज नॉट वर्किंग ऑन दिस थिंग, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन, ओनली अ बिग मेजर नेगेटिव विद वेदांता 100% शेयर प्लेज? देखिए, इसमें काफी नेगेटिव्स है वेदांता में। एक आपने शेयर प्लेस बोला, एक आपने शीशा गोवा की बात कही, काफी माइंस उसके बंद पड़े हैं। एक आपका कॉपर का जो प्रॉब्लम चली रही है टूटागुड़ी में, जो आपको पता ही होगा, एनवायरमेंटल के कारण वो बंद करके रखे हैं। इनफैक्ट यस उन्होंने यस। एडवर्टीजमेंट भी निकाला है कि हम उसको बेचना चाहते हैं, उसमें 5-6 लोग भी आ गए। तो इतने सारे नेगेटिव के साथ भी वो आज भी 40-50 हजार करोड़ का EBITDA देता है। इतने सारे नेगेटिव के साथ भी, इतना सारा नेगेटिव के साथ भी वो इतना बड़ा डिविडेंड देता है। वो डिविडेंड ऑब्वियसली प्रमोटर्स हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड लेते हैं, सबका डिविडेंड लेते हैं, और उनको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो डिविडेंड को पास ऑन करना पड़ता है, नहीं तो टैक्स लग जाता है। सो बेसिकली दे पास ऑन ऑल द डिविडेंड्स। जो खुद की भी कमाई होती है वो भी पास ऑन करते हैं, और हिंदुस्तान जिंक की भी पास ऑन करते हैं। तो वो पास ऑन जब होता है तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो वेदांता इनके होल्डिंग कंपनीज पे जाता है, वो बेसिकली दे आर यूजिंग टू डीलिवरेज द कंपनी।
उन्होंने वो कंपनी को पूरा का पूरा डिलीवरेज किया है। और आप एक चीज देखो, उन्होंने इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग है, क्या भाव में खरीदा है? इलेक्ट्रो स्टील स्टील का जो प्लांट था कौड़ियों के भाव में खरीदा है। इन्होंने जो प्लांट्स है, हिंदुस्तान जिंक हुआ, आपके बाकी के बाल्को हुआ, मतलब कौड़ियों के भाव में खरीदा हुआ है। एंड दे आर लाइक गुड क्वालिटी माइंस। मतलब बाल्को का आप माइंस देखिए, मतलब वंडरफुल माइंस है। अभी इस पे पूरा का पूरा एक्सपेंशन कर रहे हैं। एक्सपेंशन करने के लिए उनको माइंस लाने की जरूरत ही नहीं है। माइंस उनके पास बढ़िया से बढ़िया ए ग्रेड माइंस मिली हुई है। इनको सिर्फ अपनी मशीनरी, एक मशीनरी और लाना है और एक्सपेंशन हो जाता है। तो दिस इज हाउ दे आर डूइंग। तो मैं बोल रहा हूँ, इतना नेगेटिव के साथ भी ये मार्केट कैप पे ये चीज मिल रही है। तो आप सोचिए, जैसे जैसे ये चीजें अनवाइंड होगी, जैसे आपने बोला प्लेज वाली बात है, आपने बोला सेसा गोवा वाली बात है, आपने बोला कॉपर वाली बात है, तो अपनी जैसे जैसे ये चीजें अनवाइंड होगी, जैसे ये सॉल्व होगी, वैसे वैसे ये इसमें मतलब एक रकम से आप सोच सकते हो मतलब टेलविंड्स लग जाएंगे। तो मुझे ये सारे नेगेटिव के साथ अभी इस भाव में मेरे को अच्छे लग रहे हैं। तो आप सोचिए अगर इसमें पॉजिटिव होता है तो कितना कुछ हो सकता है। दिस इज ऋषि व्हाट भाई, माय ऋषि भाई, you really made me thinking about it, and I would like to tell to Amit, if there wouldn't have been challenges, तो ये कम से कम 1,000 रुपया हो जाता. So Yes, sir, because agree with this. because there are challenges, people are skeptical. अभी आपके पास में कितना शेयर है मालूम नहीं है और जानना भी नहीं है, पर क्या 500, 2, 5, 10, 20,000 लेके पूरा टाइम ये प्लेज, अरे काय को सोचता है, तुम ले ना एक बार भूल जाओ. सर The भूला ही best- हुआ हूँ, 120 पे पड़ा हुआ, मतलब भूला ही पड़ा हूँ उसको. No, no, 1.5 नहीं साल हो तो गया आपने मेरे पास. मेंशन क्यों किया? ओके, एनीवे, द नहीं, अरे एक्चुअली बेस्ट. सर ने बोला वंस कि अमित जी इज के पास ट्रैकिंग, वन इसलिए मैंने बोला कि ट्रैकिंग में तो माइट भी आपको कुछ आइडिया हो कि व्हाई अरे नहीं दिस नहीं थिंग्स अमित आर जी, हैपनिंग. आप यस सर. अगर 120 में लिए हैं तो 70-80 रुपए का तो डिविडेंड आपका हाँ, आ चुका है सर. आपका उसकी तो वैल्यू कॉस्टिंग भी लगभग 40 रुपए का पड़ 70% गया है। कवर्ड है, 70% हाँ, वैल्यू कवर्ड है. आपका तो 40 रुपए का कॉस्टिंग पड़ा है सर अभी तो। और मैंने फ्री का फोड़ा था हो तो मैंने जाएगा। बेचा भी नहीं था. एक दो क्वार्टर के बाद तो हो सकता है फ्री का ही शेयर हो जाएगा, नेगेटिव कॉस्ट में आ जाएगा। यस सर, यस. हाँ, मैं जेट एयरवेज 900 में लिया था, यूनिटेक 400 में लिया था, अभी भी पड़ा है. एनीवे, अभी ये देखिए शेयर बाजार में है ना, मैं ऋषि भाई को या किसी को नहीं बोल रहा हूँ, जनरली बोल रहा हूँ. when you buy a share when you buy a share, you do all the due diligence, whatever you feel like. मैं प्रमोटर देखता हूँ, whatever it is, forget about it, don't mention. ज्यादा बात नहीं करने का. आप अपना बीवी का बात करते हो नहीं करते हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड का बात करते हो नहीं करते हो, आप स्टॉक का बात करते हो नहीं करते हो, लेकिन आप करते हो. मेरे मुंह से बहुत बार निकलता नहीं है, मेरे पास में क्या है, दुनिया को क्यों बताना है, अपने आप को बताइए अपना. और जब भी आप शेयर लेते हो ना, किसी को पूछना मत, किसी का ओपिनियन मत लेना, मेरा भी मत लेना. और मैं तो 90% बोल दूंगा फालतू है, बकवास है. सो प्लीज हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ एंड नथिंग एल्स, देन ओनली यू विल मेक मनी. आप मेरे बोलने पे चलोगे ना तो पता नहीं कितना पैसा आ जाएगा या कितना पैसा लग जाएगा, नोबडी नोज. ओके, मैंगो डायरेक्ट बोलिए. मैंगो डायरेक्ट. यस सर. या बहुत दिनों के बाद मौका मिला सर. हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन. सर मेरा मतलब नॉट श्योर वेदर दिस पॉइंट टू बी डिस्कस, बट बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है उसमें जो मेजर कंपोनेंट्स है लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, सो अकॉर्डिंग टू their results and the business it looks good, but कौन से बैंक्स रखे कि जो वीक हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आई वाज थिंकिंग अबाउट इंडसइंड बैंक. सो लास्ट ईयर उसके कुछ प्रमोटर्स और उसके इश्यूज थे, बट अभी कुछ in terms of results and the business it is showing some growth, but उसका जो appreciation हुआ है वो मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा हुआ है. So maybe it can be weak. So any view on the business or मतलब short term में?
देखो, जस्ट बिकॉज शेयर बढ़ गया अकॉर्डिंग टू यू, ज्यादा बढ़ गया, is no reason to short. Okay? Okay. Because 99% of the time we wouldn't understand what is the reason why is the share going up. Don't think IndusInd is overpriced or this is underpriced just by the price. No, don't. It's totally wrong on your part to do that, because you will make unnecessary losses. You see, I will say, fighting that tape, fighting that tape. Tape is the prices you see every day on TV and all that is not a good way of living life. Then you will be fighting with everybody, including your wife. Don't do that. Run with the tape. Run with the tape. Don't fight the tape. And you want to preempt anything, do it in very small quantity. That's my humble request to you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. हाँ समर्थ. सर वो इंडसइंड बैंक में 1300 रुपए में कुछ बॉन्ड इश्यू हुआ था इन अरे छोड़ ना 2020. यार, अरे छोड़ो ना, जाने दो ना, उसको जाने दो, बॉन्ड को. अरे या नीलेश भाई. सर 2 स्टॉक है, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है, दोनों एफएनओ का है. वो शॉर्ट में है इन्फोसिस, 5 साल तक उसको रोल ओवर करने का है. और लॉन्ग में है बॉश. तो बॉश 1 लाख रुपया लग रहा है मेरे को 5 साल में, और इन्फोसिस लग रहा है 1000 के नीचे जाएगा. दिस इज माय व्यू सर. शायद ज्यादा भी जाएगा बट 1000 के नीचे तो जाएगा ये. अपसाइड 10% है, बॉश का डाउनसाइड 10% है. ओके, थैंक यू. अंकित लोहिया. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आपकी तबीयत? एकदम फर्स्ट क्लास है सर अभी ये लगता है जैसे कल का जो कैंडल लास्ट बना है वो रेड वाला है, तो नीचे के सारे गैप फिल करवा देगा जो 16 तक है. अब पढ़ा तेरा ट्वीट मैंने पढ़ा था, बोलो. पढ़ा सर. थैंक यू सर. हाँ, वो और सर कभी राजस्थान आए तो सर विशेष आपके अनुरोध है कि याद करें. पक्का. ओके बॉस, थैंक यू. थैंक यू. और डायरेक्ट नहीं, उनका तो आ गया सर. हो गया सर मेरा. तो ये पीडी भाई बोलेगा क्या? वो तो नेगेटिव बोलता है. ही इज नॉट अमॉन्ग्स्ट अस. अरे सर इधर ही हूँ मैं, किधर जाने वाला हूँ? ये गलत बात है. तुम ऐसा नहीं लिख सकता है. तुम कितना भी बड़ा आदमी होएगा, और तुम अपने दोस्त लोग को ऐसा नहीं बोल सकता है, फाट फांडर और ऐसा. मैं क्या बोला सर? फैक्ट फाइंडर के लिए मैंने नहीं बोला. नाम उसने दूसरा ने रखा, मैं तो खाली हंसा उसके ऊपर सर. नहीं, छोड़ो, जाने दो. सॉरी सर. चलो अपना गलती हो गया. बस आप बोलते हो तो अपन गलती मानने के लिए एवरी टाइम रेडी है सर. नहीं, इट्स रॉन्ग. नहीं, हंसने का बात नहीं है. हाँ, हंसने का बात नहीं है. I felt very odd when you wrote that. It's not done. ठीक है सर. I admit I will delete that tweet. Okay. नहीं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? आपको जो करना है करो यार. चलो, Sir, और क्या बोलते हो? Since we are talking stocks and portfolio cards, generally we are just talking. I'm not interested in hearing from you because you have offended us, all of us. ठीक है सर. Because नहीं, because he's a friend and we also think you are a friend. अभी फ्रेंडशिप में ऐसा क्या तुम नेगेटिव लिखता है यार? सर मैंने क्यों इतने लिखा सारे सर? लोग हैं, इतने सारे लोग नेगेटिव लिखने वाले हैं, उसमें अपने को दोस्त लोग भी नेगेटिव लिखे तो दुख होता है.
When I spoke something regarding nationalism, he sent me a message, I am blocking you because you are extremist. ठीक है? Anyway, sir, I never act, I only react. Yeah. ठीक है, जैसे आप बोलो. Yeah. As you बोलो. नहीं है as you. और कोई नहीं है भाई. नहीं, सचिन को मैंने इनवाइट भेजा है सर, सचिन सलूजा को. एजियो को भी भेजा है. वो सत्यन सलूजा कौन है? वो है सर, इंडेक्स एनालिसिस करते हैं. हाँ बोलो. नहीं सर, ऐसे मेरा तो कुछ ऐसा व्यू नहीं है सर अभी कुछ. वॉच करूंगा मैं. हाँ? वॉच ही करूंगा मार्केट अभी तो. तो वॉच करने के अलावा दूसरा रास्ता भी क्या है अपने पास? नहीं सर, मेरे पास मैंने एक चीज सोची है सर. नहीं देखो, सब लोग क्या करता है, 9:15 बजे चालू होता है, 3:30 तक वॉचिंग करता है. किसी में ताकत नहीं है 2 लॉट मारने का कि लेने का. सब थक गए. दिखता है वॉल्यूम्स हैव ड्राइड अप. It's very 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 bad. सर कैश में थोड़ा बहुत हो जाता है. बाकी तो सर मतलब जैसे यूएस का मैं बता सकता हूँ सर, मैं 2 चीज को जरूर वॉच कर रहा हूँ. ईटीएफ है, टीएमएफ और टीएलटी, जो 20 ईयर बॉन्ड वाले हैं. तो मतलब ये 10 साल के हिसाब से सोच रखा है कि हाँ बॉन्ड 20 ईयर वाला है. अभी उनमें डिविडेंड पे मंथली मिल जाता है, तो मैं उनके अंदर मैं थोड़ा बुलिश टाइप हूँ. और यूरेनियम में बाकी तो सर मेरा अभी ऐसा कुछ नहीं है. मतलब तो बस कैश में थोड़ा बहुत करता हूँ क्वांटिटी. मतलब जो फ्यूचर वाले स्टॉक है उनको ही कैश में करता हूँ. अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है तो फ्यूचर में मार देते हैं. और स्टॉप लॉस कैश में हिट हो गया तो बस हो जाता हूँ. एक बात बताओ सर कि अपने शहर में जहाँ पे अपने रहते हैं, यस सर, एक दिन में बहुत शादी होती है सब जगह पे. यस सर. ओके, तो आप हर शादी में जाते हो क्या? नहीं सर. तो स्टॉक मार्केट में जहाँ पे भी मूवमेंट हो जाता है, आप क्यों चले जाते हो? नहीं सर, मैं सब में नहीं. मतलब मैं वो सिलेक्टेड जो लिस्ट है बस सिर्फ उसमें मैं करता हूँ. जो स्टॉक समझ में मेरे को आते हैं, जो मेरे हिसाब से मतलब जो जिनका चार्ट अभी तक चलता आ रहा है 1 1.5 2 साल से, सिर्फ उसी में. बाकी मैं नहीं करता. अच्छा, बस थोड़ी लिस्ट सर मेरी बड़ी है कि वो मतलब 150 स्टॉक हो जाते हैं. बाकी मैं सिर्फ उन्हीं में करता हूँ. नहीं, कहने का मतलब ये था जो कि अपने को अपना फील्ड में ही रहना चाहिए. वो सॉरी सॉरी सॉरी, समझ गया सर, समझ गया सर. राइट सर, राइट सर. बलिदान देने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए. वास्तव में वो बलिदान ही मांगता है. सॉरी सर, सॉरी सर. सर आवाज ब्रेक हो रहा है. मैंने अनिता पांडा को भी एक रिक्वेस्ट भेजा है. प्रगति ओबेरॉय को भेजा है रिक्वेस्ट, इफ दे कैन कम ओवर एंड स्पीकर. इन इन्वेस्टर को भेजा है. प्रतीक को भेजा है, प्रतीक बरजातिया. समर सर, आपको सर की आवाज आ रही है क्या? नहीं नहीं. आपके ये आल्गो के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है? सर वो तो सिंपल ब्रेकआउट वाले एल्गोज है मेरे पास. मैं बड़े हाईफाई नहीं बनाता हूँ. मैं सिर्फ ब्रेकआउट वाले जो रहते हैं, सिर्फ वो रहते हैं. वो ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर हो जाते हैं. वो तो उसका सेपरेट अकाउंट है. अच्छा. हाँ, मतलब कम क्वांटिटी में रहता है. वो निफ्टी 500 पे चलते हैं.
तो वो क्वांटिटी के हिसाब से, मतलब वो क्वांटिटी भी डिसाइड वो होती है कि वो डेली ईएमए पे चल रहा है कि वीकली पे चल रहा है, ब्रेकआउट किस पे आ रहा है। ओके, बट वो एग्जिट फिर एग्जिट भी उसी में सब कुछ, वो मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट जो रहता है वो सब मेरे फिक्स रहते हैं। मतलब टारगेट एटीआर बेस्ड रहता है और स्टॉप लॉस बस वो ईएमए बेस्ड रहता है मेरा, सिंपल ईएमए। ठीक है। अभी शॉर्ट में क्या है और लॉन्ग में क्या है? नहीं सर, वो एल्गो वाले तो मेरे सिर्फ इंट्राडे के रहते हैं, वो उस पे मतलब मैं इतना ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ कि पोजिशनल ले लो। पोजिशनल वाले तो सब डिस्क्रिशनरी रहते हैं मेरे। या किन इन्वेस्टर? हाय शरद समर। सर आप, हाय सर। शरद सर आप हो अभी कि आर यू लिसनिंग? हेलो, आपका माइक म्यूट है सर। Yeah, we can't hear him. या अभिषेक, या कुछ था क्या मैसेज? ठीक है, किन इन्वेस्टर प्लीज। Yeah. हाँ, yes sir, yes sir. हाँ Ah, सर। Sharad sir, how are you doing? I think we have some issue there, but anyhow, I think people who listen to Sharad sir for some time, they should be actually getting lot of inputs because hello. नहीं सर, आवाज नहीं आ रहा है आपका, ब्रेक हो रहा है आवाज आपका। हाँ सर। समझ आवाज आ रहा है क्या? यस सर, यस सर, अब आ रहा है सर, क्लियर सर। यस किन इन्वेस्टर। Yeah, Sharad sir, how are you doing? No, I think he is having some problem. या आप बोलिए ना सर। So basically, Samad bhai, I, first of all, disclaimer is, I'm sitting on substantial of cash, so whether I want or not, I wish to market to go down, but I have my various reason for the whole thing. The first important factor is in Sharad sir's call. Actually, he specifically talks about certain sector and why market is overvalued, and mean reversion is something everybody should be able to learn and apply it. On a macro level, why am I bearish for little long period this time is in the last 22 years, the globally world economy in 2000 was $63 trillion, the debt side, and the economy was $33 trillion. Today we are at $100 trillion economy, world economy, and $300 trillion debt. So basically, we have spent close to $250 trillion in printing money to get to $100 trillion economy. So if anybody has to convince me that this will continue, the market will keep going up without observing this fact, I think it's extremely difficult for a long-term investor to just to not to have a look into this issue. Inflation may come down, ये but we are इको आ रहा facing. है, इको आ रहा है सर। हेलो,
I think Echo is Iso Hunt or somebody has to mute. I think. keen investor, Keen you can hear investor, me. you can hear me. I can hear you, sir. Yeah. Yeah. If If inflation goes down, inflation goes down, Yeah. okay. if If inflation goes down, inflation goes down, so will the so stock will the market. stock market. Yes, sir. That's what I was trying to tell. Okay, I was Okay, not I was We listening. are, not listening. yeah, we were actually facing deflation, sir, which is a major risk because so far all the asset is been created by debt. Hmm. Hmm. In a simple sense, this will has to stop somewhere. United States wants to have consumer consuming more in the country. China wants cheap labor so they can keep supplying. India is nowhere in between. So deflation will affect us big time because we, as a whole world, will face price correction. The first will affect the risky asset. One is real estate. Second, obviously equity, bitcoins, and all that. I'll be not be surprised. Only thing is when this will happen because the politicians of the world, central bank of the world, wants to keep it going. So how far they can go, it's as a normal layman I cannot say, but my study says this is a very dangerous stage we are in. So of course, people say that market will go up, and I don't know how it works. I have actually taken initiated a shot in a positioning level 10% now. Probably I will increase as the time comes. So this is my view. No, No, keen keen investor, investor, playing Nifty is playing not the Nifty is not solution the of solution shorting. of shorting. You should You find should another find ways of another ways making of money. making money. If you'll short If you'll Nifty, short Nifty, your view will your be view always will be always clouded clouded and you won't and be you able won't to be able to think think rationally. rationally. Actually, I'm short some of the. I don't trade on Nifty. I'm not a day trader. Some of the sectors, probably which includes some other asset. Okay, Okay, good. good. As As समझ ये समझ दर्शन ये भाई को दर्शन इनवाइट भाई को इनवाइट करो ना, करो ना, दर्शन इंजीनियर दर्शन को. इंजीनियर को. हाँ सर. तो सर मैंने नीरज सज्जर को भी इनवाइट किया है. नीरज सज्जर. नहीं, नहीं, जिसको आने का वो जिसको आने आएगा. का ये वो तो आएगा. ये तो अभी अभी कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? नितिन भाई बोलिए. नितिन भाई बोलिए. Yeah, good evening everybody. Good evening sir. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. मार्केट सर अभी तो बस रेंज बाउंड लगता है 17,650 18,000. सर आई थिंक सर आप एक बार थोड़ा अगर म्यूट हो सके आपका तो क्योंकि इको आ रहा है. कंप्लेन हुआ, मैसेज भी आ रहा है. हाँ नितिन. बस समर सर बस अभी तो रेंज बाउंड लगता है सर. थोड़ा सा मार्केट 17,650 18,000. स्टॉक्स में सीमंस देख रहे हैं 3,000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट खाता है तो वहां ट्रेड बनेगा और 2880 के नीचे शॉर्ट है. ज्यादा कुछ सर है नहीं अभी. वो सीपीआई डेटा है सर 13 सितंबर को, तो थोड़ा फ्लक्चुएशन उससे हो सकता है. बाकी सर कुछ दिख नहीं रहा ज्यादा. ओके, ओके, थैंक यू. दर्शन भाई लेव ना, आओ ना आओ ना स्पीकर. स्पीकर पे. दर्शन दर्शन भाई मेरे को नहीं दिखाई दे रहा सर. ये ऊपर है ना दर्शन दर्शन है. इंजीनियर. भेज दिया सर रिक्वेस्ट. या.
a few interesting points, and these points revolve around the food supply and which a country like, so this is a story in this last week's newspapers in Financial Times, which most people can access. So about 38% is a food dependency of Japan on the food cycle. That number is going to creep up meaningfully for a whole lot of them. And so one is, of course, a significant rerouting of this food supply chain. And I personally think that the only way that we can play this through in India is through, to my mind, AgChem players, foreign nation players. They all are expensive, but I don't see any reason why they should correct, because more and more work is going to keep shifting out, because everybody would need to maintain certain inventory levels. The other one, sir, is quickly a quick few thoughts on this whole European crisis. So two things have happened, sir. One is, of course, the supply has become virtually negligible on the Nord Stream 1. I think it's down to zero. I think the only one that works seems to be from some Ukraine, and it hardly meets about 20% requirement. But the Europeans are, sir, they've done a great job. One is on food supply, sir. They've virtually secured about 40% of all the cargoes which are going out of Ukraine. They've gone ahead and secured them all, which is quite contrary to what was promised will go to the poor countries, right? So they've gone and hijacked all the food. They've realized that there's a food crisis that is not going to go away soon, or maybe they're building inventory levels. On the energy side, they have done something which is called floating terminals of LNG. Now, this is a quick fix solution, but the interesting thing is that once you get past the quick fix solution, especially this winter, you're going to have to build an LNG terminal capability which will move the gas, especially European gas, Qatari gas, Australian LNG, from the coast into the interiors. Now, you're going to spend humongous amount of money on building this whole pipeline infrastructure. I think in the Indian context, there are a few. One, of course, with a very poor corporate governance track record in the past. He's trying to change. API certified pipe guy. B, on the other is that 23% of Germany's energy consumption now comes from renewable sources, which are effectively solar and wind. Now, again, a company which has gone through a significant M&A, renewable energy space, now calls itself solar cum new energy play, prominent business group running it. I think the worst of this whole solar PV cell cycle that we saw in China, manipulating, pushing people out of business, I think is behind us. I think old contracts where they lost money, I would say that even to the extent that they had given guarantees out, or which were invoked, not provided for, I think is in the past. You have a player here who realizes that this is potentially a big opportunity, including on the storage side, because the more you do renewable, the larger is the storage requirement. So I think these two plays which are there, poor corporate governance in one, but turning around cash flow is very strong, and the other one is a new group which has taken over this renewable energy play. I think this could be in a market like this where things are anyways heated up, if somebody wants to do a contrarian play, because the trends are very solid, the Europeans can't reverse the cycle of renewable energy. The Europeans can't move away from putting up terminals on their coast. And just one small pipeline between Spain and France, the estimated value of that pipe is about $3.5 billion. So the capex cycle on this whole piping space, to my mind, could be, it has begun. The prices of all these stocks have moved up. Some of them actually went and hit a 10-year high yesterday, but I think this is not ending here soon. I think this is going to get bigger. For example, to give you a small flavor, the total subsidy that Germans are giving to the industry for energy consumption is $350 billion. And yesterday, the plan announced by the new UK Prime Minister for energy cap for the UK households, that itself will cost at a steady state price at about 40 billion a year. So about 80 odd $1 billion. At today's prices, about 150 billion pounds, I think. Yeah, 150 billion. That's the scale of energy crisis that these people are facing, and they will have to spend humongous amount of money. For example, the Europeans are like Germany is already at 31% coal consumption. They've already gone around and turned their turned some of their plans that they had. So I would think these are two sectors which I think a steady state. Domestically, I haven't seen the data in the recent times because I've been a little out on the road.
But what I do realize, sir, is that there is no evidence to suggest that our GST is slowing down, our e-way bills are slowing down. So I would think that, my sense is that probably the worst of, gross margin losses in the June quarter because of raw material inflation also, to me, I believe, is slightly behind us. It will only get better. Traction is very solid. In fact, at 6% stamp duty, Bombay real estate market is sustaining, which is very strange. I thought it wouldn't, but it is sustaining. It may not be doing very well, but sustaining. And I think that holds good for a whole lot of it. So home improvement plays, some MDF players have shown spectacular numbers. I think that this there are these pockets of strength, sir. And on the credit side, sir, looking at the credit growth, I only know one thing that goes with 50% CASA ratio are players who are going to take this up. The rest of them are going to suffer. So, liability franchises which have to raise humongous amount of wholesale money, I think they're going to get squeezed, bad. So it's going to be a, very cherry picking on the BFSI side. I don't think it's going to be a home run because some people will have to pay a heavy price for a low CASA ratio. So this largely sums up my thoughts on some data which I thought was interesting for people who want to dig a little deep and search for ideas in this space. So I'll end here, sir. No, Darshan. Yes, sir. Yes, sir. You roughly mentioned the pipe company and the energy company. Yes, sir. Energy group rather. Yes. Now, do you have any specific ideas where people can make money without naming them? Sir, so I'll just give you a number, sir. Our pipe companies, but why is there a little advantage? I'll tell you in the Indian context. One is our players are API certified, so effectively they can be put to use. B, you have a little bit of an opportunity on your commodity side because you are a pretty significant steel producer. Yeah. So you have a small upside there, and the reliance on an other player, which is the China, that has become a little bit of a suspect. Like, for example, the German trade minister or commerce minister last week said that we have to move away from, we have to reduce Chinese, exposure or our dealings with them. So I'm not too sure if a scale player can come out with our competitors like Bangladesh, Vietnam, Cambodia in these spaces, which is why I think this is an opportunity. There could be a Korean company, I'm not denying it, but we have an API player. There is a domestic cycle which is continuing on gas transportation, but there is an opportunity which is very scalable, which has opened up. And I think capacities will run out everywhere to my mind. And this money are going to be spent sir, very quickly because they want to move away. So this winter they will deal with because they've got to 82% gas storage in Germany. But you are not going to keep waiting of what's going to happen next winter. I think these people are going to spend the money. I think at that time they'll be price takers, sir. They will not necessarily, to my mind, say कि इतने में लूंगा and I will only work at this pricing. I think they'll pay nice premium and buy it, and I think there is a play here, sir. That is my view, sir. No, what I was saying is, yes, apart from this that you suggested, yes, sir. Are there any much more compelling buys according yes, to? I. No, Yes, sir. I don't mind naming them. Say, for example, Cana Metal. Okay. Right, sir. Right, sir. Sir, I'll only tell you one thing, sir. The energy prices are up 10x in Europe. The subsidy by the Germans alone is 350 billion euros. The UK subsidy to its households are about 80 billion pounds at a current at a lower rate, at average rate, and about 150 billion dollars if these prices remain as firm as they are. Now, how in the world, sir, will these people, where the statute or their constitution say the energy first has to be supplied to the households, and then it has to be given to the industry? I would think that they are going to cut down a lot of capacity. I think that is why I said, sir, where food is concerned,
fluorination plays, they are firm, but I don't see them giving away. I think they will remain firm. There could be an extraordinary opportunity that will come. But because they're valued expensive, sir, it requires a nimble-minded person to look at them. It would not be, I think, a hold and sit strategy to my mind. No, I'm very nimble. I change every second, like. Yes, sir. So So you, I'm so you, so largely, sir, the flavor of what I think I've shared with you. I think the plays. I think there are very nice select set of companies out there where gross blocks have yeah. fallen into place. I think they will work, sir. I mean, you know, uh, there could be a lot of lot of industrial, sir. I think they've done very well. But as I said, no, I find it very difficult to think that when you're giving out such large subsidies, you're blowing your budgets away, your currency, for example, the euro is trading below parity. Your high energy prices have taken away your current account, your trade surplus. These countries are stressed. I don't see any reason for them to keep experimenting more. They're all going to do a quick fix band-aid solution, and for them, I think to put up an LNG infrastructure for energy is going to be top priority. No energy, no industry. No industry, no revenue. That's how I see it, sir. Okay. What about Siemens and ABB? So they are expensive to my mind, but I would be. I mean, I keep getting worried. We own it first and foremost. Disclosure, sir. We own some of these names: ABB, Siemens, Kena Metal. So I would like to give that disclosure that we are owners. So I have a little bit of a bias, which is why I only shared the data with you, that people can look through this FT papers of the past week. All this data is there, including this Japanese food situation, which is a top priority for that country now. Where they're getting very worried about their dependency on the food supply chain, but they have no choice. So I don't know what they're going to do next. But they may go into large amount of contract farming. I think there could be such great opportunities, sir, out there for us. Is my view, sir. No, So yes, sir. no. Yes, No. Basically, I took the name of Siemens and ABB yes, sir. because the parents are in Europe. Okay, Yes, 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 and is the subsidiary. Now, yes, I was talking to a few people. They yes. say Siemens doesn't take order for 1 year. Right. It's so packed with orders. Yes, It's not yes, accepting orders. yes, I don't know much about ABB because I don't know anybody over there. But my question to you yes, sir. is having an European parent, Yes, sir. will it be negative or positive? So I would like to put it like this, sir. If you're running a business, any low margin dhanda in an energy strapped world, you're going to say, boss, let's ship it out. And I think they're going to ship it out. Now, when you ship it out, sir, what will happen is that ABB and Siemens may also be open to, this is my assessment, sir. I have not read anywhere, and I'm just guessing that this is what they may want to examine. If he's the manager, like any other manager would think, okay, let's look at reliable partners in India who've been around. Like for example, it could be, let's say, NISJEC, it could be LNT, it could be it could be the Carborundum Universal Group, all of them, CG Power, whatever, it could be all of them. And these people have been reliable partners with us in the past. We were doing 2 3 5% of their volume. They have capacity which is lying idle. Let's ship some of these lines into these players, at least temporarily, and then figure out whether we can ship them permanently to India. Because clearly they're not going to go to China, sir. That is very clear. China has the capacity, but they don't want to go there. Vietnam, Cambodia don't have these capacities as of now. Maybe they'll come up, but here you have players who have that capacity. So they may be very tempted to look at them. I think that we will see every quarter, so we have to keep small see manufacturing companies annual report. Somebody just flashed the internet. Now this guy is believing that with the current order book that he has, he will become 5x, 3x the top line in 5 years, which is to my mind fabulous. Can he do it or not? I don't know, but at least they believe that they can do it, and they have capacities, and they're running at very low capacity utilization. So this is a companies where operating leverage will come in very sharply in some of these small places, sir. It will happen, is my assessment, sir. I mean, the energy situation, you can't have a situation where you have a floating terminal which is standing in your river and where you pump gas out. I think that's a quick fix solution, but that is not the solution. The solution is a permanent shift
where you will have to put up scale play on the coast, by the US LNG, by Qatari LNG. Interestingly, in the US itself, there are protests now of exporting LNG out because in US the prices of gas have moved up by 2-3x. It's a very interesting world. Darshan, I just wanted to Yes. ask you something about the companies which are listed in India, but they have a Yeah. lot of Yeah. exposure in Europe. Exposure not just in terms of sales, in terms of production as well. हाँ For जी. instance, ट्रेन इंडस्ट्रीज अभी परसों का बात है, न्यूज आया था सुबह को कि यूरोपियन का उन लोगों का क्या बोलते प्लांट कुछ बंद हो गया हाँ जी. और सीधा 8 टका घुस गया. हाँ There are जी. quite a few other companies also which have production in the EU. So, Yes. yeah. So, how severely bad is the energy crisis as of now, according to your understanding? So, देखिए, as of now, the state is giving $350 billion subsidy in Germany. I am only saying that $350 billion subsidy effectively shows up in your gross margins, right? Or at your EBITDA levels. If you remove that $350 billion away, you lose $350 billion because that's the subsidy which you're getting. And this subsidy also is being printed by them. Is it freshly or is Yeah, it? yeah, it is all printed only. Na? ये तो budgets में जाएगा. The Germans are conservative, but the point is that it is a payout, right? It's a transfer. Now this could be a 2-year solution, 3-year solution. I wouldn't know that. I don't have the exact specs, but these articles are in Financial Times of this past week, and I would strongly recommend. That is a great read because you'll get a little more conviction on looking at some of these things on the piping space, new energy space. Yeah, definitely I'll read it. Yeah, it's there, and you can read them, including this article on Japan struggling on food chain. We must remember that these are all very rich countries. They can afford to pay it out, and today, to secure themselves, they are going to be price takers. For example, no one would have imagined that nearly 40% of the cargo which was going to go out of Ukraine would go to the rich countries. One always thought that it would go to the countries which are food starved, like in Africa and Middle East. But unfortunately, the rich countries took away 40% of the cargo coming out of Ukraine, which is very odd. Which is what. So it's a pretty strange thing. So 37 of the 87 cargoes they have taken away as of now. Even in India, we say that we have a surplus of wheat, na, and then of late we have a news ki export ban kar diya wheat ka. Well, that is, I mean, see, I think what is good for the country is something which I don't want to criticize. One may keep saying whatever it wants, but food security is very important in a 140 crore population country. Darshan, हाँ sir, yes sir. so am I right that in this fluid situation, Yes sir. as far as India is concerned, I'm Yes. not I'm not bullish at all, Right. except for some industrials. Yes sir. Pockets of strength, sir. We have to only focus on them because broad markets are tough to call. I have no view on this, but No, no, industrials, ma. no. Yes. For me, it's very easy to I'll, I'll, I'll call the broader markets because Yes. there are no consequences on me. Right. So if I'm wrong, also it's all right. Yes. So, Yes. so I'm saying, am I Yes. right in saying that there is lots and lots and lots of bullishness in industrials in certain pockets? I would think so in certain pockets. I think the capex that has been getting announced and the state that you are seeing the energy markets in, I think it's going to work, sir. It's going to work in those pockets. Thank you so much for confirming. Now, one last question. Huh, What's sir. your take on QSR? Sir, I'll just quickly give you a little background. Again, I'll give you a little colored view. I personally think that they're here to stay. They're going to get very scalable. And I think, I was on a tour. I read about this very famous US basketball player called Shaq. His name is Shaq. Now, this Shaq guy, with all the income that he has, he invests in franchises of food companies.
So he may have chick fillets, and there's some brands that are called. I read in the paper. He has Subways. He has what else? So these people own franchises because these are extremely profitable businesses. Now, also very clearly, sir, that that small democratic set of people are going to keep shifting to this QSR model for their quick fix meal solutions. I think in India we are the starting point of this quick fix solutions. I think we should be in them now. The point is that the problem with the biggest franchisee, which is very popular, the royalty is a hangover. So I don't know how that will Are shape. you talking of the pizza one? No, I'm talking about the burger one, sir. The Okay. burger one, so there I think there's a royalty hangover. I don't know how that will shape up. Maybe they'll get a waiver, but I clearly think our space ma jaga che. I mean, I think this place is to be here to stay. It could be a very early stage of an FMCG. When people said that personal care products में बहुत बड़ा तेजी आएगा, and we were all skeptical that who's going to buy an 120 rupee face wash. But the point is, it worked and it is there. So I would think this is very on a similar line, sir. I think we are very early stage, and some of the greatest. I mean, I wouldn't have imagined that a basketball player in the US would own, franchises of all these things. And I mean, the US, if you go, because I had very limited exposure to that country in the recent times, I can only tell you one thing: that the only thing that is here in this country is a QSRs, and QSRs work, and they work wonderfully. And I can only tell you one thing, sir, that we'll be. I'm scandalized with the logistics of this country, and I would think that in India, a turnaround logistics play which is lying out there. I'm very keen to pursue it, and I'm going to probably read up a little more, figure out whether it makes sense. But sir, logistics in India, I think, to my mind, is in an infancy stage, and maybe the markets when people went in when they bought delivery, we were scratching our head, but it is also because of lack of understanding of how deep the logistics cycle is in the entrance developed world. And that's when I saw it firsthand. I realized this is my first trip, so it's a great learning experience in that context, sir. No, on the logistics side, Haji, sir. I would consider Zomato also as a logistic play. It's There is basically no doubt in my a delivery. mind. I have no doubt in my mind. But sir, what can happen is that I'm not too sure whether it can be cannibalized by the likes of a Reliance who went and bought a VFast, or he went and invested into a Dunzo. So I'm a little worried about that part. I'm not too sure whether that will eat away or run into that risk of the Reliance and the likes coming in, because just dial na tame app पर जसो ने, there is a window for you to do booking of restaurants and ordering or something. I think it's evolving there a little bit. So I'm not too sure, sir. But it's a big No, business. no, no, I'm not bullish on Yeah. Zomato, but I was just Yes. mentioning Yes. Yes. now delivery and all that. Yes. They are great plays. S- I don't know why So Indonesian. what I will tell you, sir, is that I had naan in one of these places, and this naan was manufactured in Canada, and I was eating that naan on the East Coast. Hmm, Now you can imagine That's great. the logistics cycle, sir. I think the logistics picking and giving, so that India tendency, which is why, sir, I think when people went and bought Delhi, and we couldn't figure it out, but maybe they saw this coming. And I think this is going to be far bigger than we think. At 15% logistics cost in India, we're uncompetitive. And you get it down to half that cost, so you get it down to about 10 odd percentage points. Your efficiency, your competitiveness will dramatically change. Which is what the government's intention is under Gati Shakti. Whether it happens, doesn't happen, so that is too early for us to, pass any comment on. See, Darshan, I want to make a far-reaching statement that Yes, sir. if you are investing in uh, uh, conventional businesses like Right. IT or banking or whatnot, Haji, you sir. will not make money. You might earn some returns, but you will not make real money. Real money is in industrials, Yes. QSR, Yes. logistics, and one or two more segment which I'm not aware of. Sure, sir. So, I think it will evolve. Yes. Yes, sir. so basically, I'm saying is invest in ideas,
Yes, 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 Change yes. your I have, investment philosophy. Don't look yes, for yes, dividends, growth, and all that. Look yes. I for, would think buy for compounder. See the sector opportunity, sir, is how I see it. yeah. Sector opportunity, sector में compounding capability, revenue में हसन है sir. Operating leverage will deliver the margins to us. And when you Just, and you the kind of escalation that we saw in prices in the first quarter, between December quarter and the March quarter, the prices just went through the roof. They just went 20, 30, 40%. So this doesn't happen in normal circumstances year on year every year. So if companies have gone through the brunt and have got penalized, I think it doesn't mean that they're incompetent managements. I think they have gone through the brunt because the cycle was just too quick for any smart guy to do it. And sir, no manager or a no promoter is incentivized to say, okay, boss, I will go and warehouse 6 months of inventory because I see aluminum prices going up. He'll be penalized by the investor by saying, hang on, you run your business with a 30, 45-day cycle, which will be done in the last 10 years. Why you want to change it because you have a view on aluminum? Markets will penalize him the other way around. hmm. Darshan, one personal question on Twitter. Lot of people say I'm a bear operator. How true it is? So I see it as slightly differently, sir. I think being conservative and investing smartly doesn't make you a bear. Hmm. I think one can. I think uh, my personal take, sir, is that that investments have yielded more money, and they will always yield you more money. At the same time, there are a great set of people, sir, who are exceptional players on options, Nifty, Bank Nifty. But I'm very happy to say that I just don't understand the subject at all. I stay as far away as I can. At the same time, happy compounding and leveraging on some of these ideas which I like because the market allows you to do that. So you can get a similar kind of a profile. Opportunistic trading, sir, everybody does, and I think everybody should because it just puts you on top of the game whether you understand the subject well. But I wouldn't call you a bear, sir. I think you're fair in flagging of risk, and I think people should understand that risk management is more important in the market than trying to make money because you don't want to be caught with leveraged with your pants down. It can kill you. It can just blow your book away forever and not allow you to come back. Hmm. I see it as that. I think risk management should be the mantra, and I think instead of calling you a bear, I think they could tell you as intolerant risk manager. That could be a better word, sir. What? Intolerant? Risk manager. Okay. Risk management, intolerant risk manager who does risk management of his positions far faster than otherwise. Hmm. That would be a more, like a little Wall Street Financial Times front page headline type of a name also. No, I was long Ambuja Cement Yes, sir. and singing all the good things. After five Right. minutes, I was saying all wrong things about Ambuja because the price went down. I'm Yeah. not concerned in Yes. trading Yeah. and Yeah. Yeah. investment philosophy. Yes. I Yes. the best, nothing else. Yeah. Oh, I so I think so. That's what I just keep looking at the data, and I think sometimes the data helps you in making good decisions. Sometimes you are too early in the game and tires you out. But we can't go wrong. That's why I rely on some of these data sets which I pointed out. And this is only, we have read only two data sets. We've read in Germany and UK, but as we get more and more granular data out, you'll get a better sense. And I'll tell you one thing, one very interesting thing I'll tell you, sir. India Machine, this UPI that we have seen hmm. is a game changer. In the United States, sir, I can only tell you one thing, that the point of sale is a stranglehold of two credit card companies, and the whole fintech business in large company is a stranglehold of a BNPL player called Klarna. Hmm. In India, thankfully, we are not monopolized by one player, and I can tell you that is the greatest thing that happened to us. India, wherever you go, the whole point of sale mechanism, when you pay your bill to go out and you do a self checkout and all, is completely controlled by the card paying companies.
completely. And by 22, there are only two major players in the world, and both of them are American companies. And I can imagine them why they are gunning for us to dilute or allow them a far more flexibility in India, because they've realized that in India, point of sales is outside their control to a market which might become the world's largest consumption market. In Good. terms of per capita number of transactions, it may not be value wise, we may not be comparable to that country, but in terms of absolute number of transactions, we'll be the world's largest. And it's phenomenal how they have a stranglehold. So I like this player in India which is listed, where people's wealth has got rubbished. I sometimes think there is an alternative player, and he's also the biggest biggest lender now, with a very strong book. Where, but it's just a vague trade, sir, with no great conviction, which for me to suggest or give more granular data on. No, that's no good. And Yeah, Darshan, that's what yeah, tell yes, me. sir. No, that's why I didn't want to comment on it. But this is my experience, sir. Kenya point of sales are completely strangled hold of two credit card issuers. There's no third place out there, and there is no fintech other than Klarna. In India, you don't have that, sir. You have you'll be tired of the choices that you have, and that's the beauty of our market. That makes it So, very, very competitive. so you would advise anybody to buy SBI cards? No, sir. He'll get demolished by the fintechs and the BNPL players. I would think no, sir. I don't think so. Okay. No. I think, sir, after industrials, piping, new energy, 23% of European German is renewable, 19% in, I think, Netherlands or France. Low hanging fruit trade, sir. I think this person who's understood it has changed the name also from solar to and new energy, Mm. focusing on battery storage, very clearly mentioned in the presentations. I think, sir, I think, it might be a long shot, but if it works, you have a player who's got that capacity in India. But the only thing is that it's too expensive. Yeah. But sir, I am saying that you are paying the price for the optionality of owning that, and that is really what it is, sir. No, but It's the so optionality, and the promoter has a bandwidth to be able to deliver, sir. See, promoter has delivered what the country had not imagined. yeah, I agree with you. But the proximity with the government wouldn't hamper if anything changes at the center. Uh, Sir, at that size, Okay, I at got. that size, Yeah, I'm yeah, not sure. I got. And It- no, Darshan, leave it. Uh, yes. you know why I'm a good investor, very good investor? No, sir. I Because think you must share that with everyone. no, because I have few friends like you who do Ah, the research and I do the picking. no. Thank you for your compliment, sir. No, It's always, you, no. if our conversation helps the young minds here, someday young minds, because we are aging, so maybe someday these young minds will come and share with an idea which we can also work on. It will give them a little more conviction to evolve around the data set that they've read and which they like and why they like using the data and idea or sector, and we will all thrive and prosper with that. No, Darshan, in my spaces or elsewhere, people are talking about Nifty, Bank Nifty, and the poster boys like iBank and this. I at times wonder what future do they have? Why are they talking or discussing? क्या बात करने के रोज ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया होता रहेगा यार. Those are tools of speculation. Avoid them. Yeah. So I Concentrate have on only true ideas. Yeah, so I will only leave, I'll just share my perspective on this. I think, we are very early stages. So I'll just give another data set. So just this is again, like, so today when you go on the road, you pay toll, right? We pay Yeah. toll everywhere. Now, similarly, every time in the morning you log in, you're going to pay some toll every day. Now, the toll operator, there's one toll operator now who has a 21% market share. Mm. Now there are other toll operators also which is listed. Now these toll operators, sir, have about 40 to 55% ROE and they have payout ratios of 60 to 80%. Mm. Now
toll operators who were getting into this business with P money and were doing a customer acquisition at any cost have now seen that the funding cycle for them has slowed down. A classic case is, Robin Hood, pump and dump kind of stuff which possibly had got a lot of money in. Now, so the existing toll operators whose market share has moved to 21%. And sir, when these toll operators spend 100 crore rupees in tech platform, development, support, security, eventually the markets will migrate to these 5, 6 players only, sir. There'll be no one left. Yeah. I think there'll be no place only for anybody else to survive. Now, if this toll operator that we are talking about, which I hope very angelic kind of a name that he has, has the CTO of the greatest businesses in the world working there and running it as a CEO. The hirings that they've done of the greatest minds in this country who are coming and doing their platform. I would think that if these things correct, and if these young people who we are talking about, who are talking about Bank Nifty, ICICI Bank, they're all going to be around. They'll evolve and will become better players. But they should also figure out that why not a toll operator in which they are using every day and paying bakshish and coming out. And I would only suggest to them, sir, read 5 great publications, every day. And between Saturday and Sunday in a 48-hour window, spend 4 hours reading some of these great magazines. There'll be enough and more ideas thrown out. And join Sharad on Spaces for the rest of the wisdom. No, no. Or better idea, speak to Darshan directly. No. You don't have to do any work. No. They'll only get gyan which may have which might have theoretical value only, sir. No. But one thing, Haji. whatever ideas that you have put across, okay. Right, sir. Suppose you have put in 100 ideas to me. Right. Hardly 2 or 3 would have gone wrong. Maybe. I don't know. But Right, sir. your success rate is great here. No, sir. One thing, sir, I realized that when last time I spoke to you and I suggested one name and you said, "Arey, nahi." I went back and read it. Luckily, I dropped that idea. So it works both the ways, sir. You also bump off ideas which don't look sensible. Yeah. Which improves the success rate, sir. So because you bumped that idea off, it is not part of your number count. So I think it's a mutually beneficial conversation. I hope our listeners today have benefited from this conversation. I wish them luck and I hope they all do very well. Yeah. Thank you. Thank you, sir. I'll take a leave, sir. Thank you very much. Yeah. Okay. Thank Bye. you. Srinivasan. अहमद भाई श्रीनिवासन को लो. हाँ सर. Okay, what's it? Viraj. Hi, Sharad bhai. Good evening. Sharad bhai, I had a question for Darshan bhai. Basically, he spoke about UPI, right? And UPI definitely 14.55 billion transaction quarter on quarter, year on year. It is growing like crazy. And US, of course, he is basically quoted right there. The technology and monopoly is there. But what is the? I'm very inquisitive to know what is the business model behind it, because usually American companies they are profit centric, and there is something called a merchant discount rate against which the transactions or the volumes get pick up, and the revenue gets generated. But even RuPay cards have not got adoption in India because banks don't want to basically do a business which is not high yielding for them, right? So I just wanted to take basically understand from Darshan bhai what is his take on that, because currently UPI doesn't have any mechanism in terms of MDR. Though central bank is looking at that, but the rates which they are quoting are not very competitive. So as of now, there's a 16 crore ka subsidy which the center has for this digital payment platform. RBI discussion papers in public forum. I think we should just have some patience because this data storage has to be done, right, for all these things, and the platform has to be built. I think all these people are investing in it. I think it's a matter of time before it comes in. Abhi, at the same time, let's not wish away कि भले right now the private sector is not making money out of it,
But the point is that the country as a whole has benefited humongously from this. So, this government is not going to wish this away. Now, how do you make people make some money out of it? I agree with you. Today, there is no window. The private sector who's doing it is possibly not making any money. But I think kuch na kuch to hoga, because the benefits of this far exceed the potential payout. And so, if you remember that they are talking about giving them a fee structure which is quite similar to, I think, in RTGS or IMPS, if I'm not mistaken. So ek discussion is on, and that the finance minister came down very aggressively when the RBI discussion paper came in public forum because of the hue and cry. But it's just like, they've left this thing in the public forum, and I think they'll wait for opinion to be built, because nobody wants to wish it away. वो तो बहुत clear है. Nobody wants to wish it away. Nobody wants it to die. Everybody wants it to only get bigger, including be it the businessman or be it the vendor who is not benefiting from potentially this, because they have realized the benefits of it far exceed anything else, and especially in commerce. You go to wholesale markets and you can see it works like fire. So I think I agree with you. As of now, there's no revenue model. Hoga is what I believe in, which is why I think that this fintech, which killed people's aspiration after listing, could be an interesting place to watch. But as of now, there's no conviction on that idea, and I think it'd be unfair for me to suggest that or even discuss it further with anyone else. Samat, you wanted to say something? Yes, sir. They are actually earning out of the volumes with the service provider. जैसे टाटा स्काई का सब्सक्रिप्शन किसी ने यूपीआई से किया, तो टाटा स्काई विल बी पेइंग टू द प्लेटफॉर्म जो रिजर्व पे है या जो भी है एनएससीएच का, तो दे आर गेटिंग दैट पेमेंट फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर इटसेल्फ. अच्छा, ओके सर. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. बजाज फिनसर्व का, सैमसंग का और एलजी के साथ टाई अप होता है. दे गिव दिस 0% लोन्स on the TV or washing machine. Actually, that is a pre-decided thing कि हम इतना वॉल्यूम देंगे. Samsung says to Bajaj Finserv कि हम 200 करोड़ का वॉल्यूम देंगे आपको प्लेटफॉर्म का. So they don't charge anything, but Samsung gives them the difference amount, जो भी इंटरेस्ट का होता है. They pay it from their pocket to Bajaj Finserv. नहीं, ये बात हो रहा है यूपीआई का. यूपीआई में भी सेम है सर. यूपीआई में जो वॉल्यूम होता है, जैसे पेटीएम वॉल्यूम करता है यूपीआई थ्रू, ओके, तो व्हाटएवर वुड बी द टोटल वॉल्यूम, द सर्विस प्रोवाइडर विल बी गिविंग देम ए परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम. दैट विल बी द इनकम. हाँ, पर अभी बहुत वो काम होता है, वही डिस्कशन चलता है. समर्थ भाई, एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ. जितने भी ये यूटिलिटी पेमेंट्स है ना, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो कमिंग अप विद समथिंग लाइक कॉल भारत बिल पे एंड ऑल, ये सब चैरिटी है नेशन के लिए, राइट? बैंक्स डोंट अर्न आउट ऑफ इट. इसमें क्या है कि देयर इज नो डिस्काउंट रेट. आप सरचार्ज चार्ज करते हो, कार्ड मेंबर से लेते हो, राइट? तो आई डोंट थिंक उसमें ज्यादा कोई अर्निंग है. वॉल्यूम्स पे भी बहुत छोटा अमाउंट मिलता है, वो भी ब्रेक इवन करने के लिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड इन्वॉल्व होता है और बाकी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं. तो सर, रियल प्ले है क्रेडिट, राइट? और क्रेडिट पे अभी तक एमडीआर जो है वो इज द मॉडल व्हिच हैज नॉट स्टिल टेकन ऑफ एट एज फार एज रुपे इज कंसर्न एंड यूपीआई इज कंसर्न. यस श्रीनी. Good evening, Sharad bhai. Good evening, Samarth. Yes, sir. Nothing. I was actually listening mainly. A late join here. Sorry about that. The fascinating. So I want to thank this Mr. Darshan. Fascinating insights. My God, दिमाग का बत्ती on कर दिया उन्होंने on a bullish note, which is very difficult for me these days. So nothing new to report, sir. I mean, from a consumer side or fundamental side, I would only point out on some of the consumption-facing ideas like QSRs and so on. You have to take a bet also on how much consumer income their target audience is going to have over the next 3 years, 5 years, and I feel some of the optimism may need to get tempered. So I would like the mid segment kind of players a little more
Some of these more high priced guys may struggle if they, especially if they're already at very high valuations. Yeah, stock market. हाय मैं बहुत बार सुनता हूँ हर बार सभी लोगों को, तो मेरा कहना ये है कि हम सभी लोग बात करते हैं हमेशा कि मार्केट बेरिश हो जाएगा, बेरिश है समथिंग, बट पिछले 1 महीने से काफ़ी मार्केट अच्छा चल रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आने वाले टाइम पे कैसा बिहेव करेगा?